Saini, and I'm here to share the success story of one of my IELTS students, Gagandeep Kaur. Recently got an amazing score of an overall 8 bands in her first attempt. So I would like her to introduce herself to you and share her journey of IELTS preparation. Okay, over to you, Gagan. Hello everyone, my name is Gagandeep Kaur and I am a successful IELTS student of MK IELTS and Spoken English Institute run by Dr. Kaur Saini, and I am able to score overall 8 bands in my first attempt with the 9 in reading and 8.5 in listening, 7 in writing and 6.5 in speaking. Alright, Gagan. So tell me, what did you do? Like, what kind of preparation you did, except the material that was provided here, in order to score this high score? Because normally reading is such a module where students are stuck at 5, 5.5 and they hardly score a 6, in their IELTS reading. So you managed to score a 9 in that. That's commendable. So how did you prepare for that? Well, I have initially heard from many of the students who have cleared their exams for IELTS कि starting के अंदर उनको बहुत ज़्यादा difficulty आती है अपना IELTS reading exam clear करने में. But actually reading के लिए जो main चीज़ है वो है starting में आपके पास एक comprehension base level होना चाहिए. General vocabulary is very essential, that should be required for a person to crack IELTS exam. Right. And the comprehension should be good. And luckily I was having that. So हमारे पास काफ़ी सारे ऐसी different questions होते हैं IELTS की reading के अंदर, जिसके लिए हमें काफ़ी सारी different strategies चाहिए होती हैं, जो कि मैंने बिल्कुल यहीं पर इंस्टीट्यूट पे मैम से ही सीखी हैं कि वो कैसे अटेम्प्ट करना होता है उन क्वेश्चंस को. एंड इनिशियली 10 to 15 डेज सिर्फ इन्हीं स्ट्रैटेजीज को करने में मैम ने हमें सिखाया था कि कितना टाइम देना चाहिए हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में. एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैंने अपनी खुद की भी प्रैक्टिस की है, घर पे भी कैम्ब्रिज की बुक्स फॉलो की हैं. एंड मेरे हिसाब से दैट इज़ इनफ फॉर a person to score good bands in IELTS. The most important thing that Gagan highlighted is that at least you should have such a base so that you are able to comprehend a general text. आपके सामने कुछ भी, if there is some content in front of you, you must be able to read that and comprehend on your own. You must have at least basic vocabulary before you think of attempting IELTS, because those students face problem who have a really weak base and they lose patience. Like jaldi करते हैं, मैंने देखा है आजकल. Everyone knows his or her pace. So if you think that you are not able to comprehend the text, अगर आपको पढ़ के समझ ही नहीं आ रही lines, अगर आप sense make out नहीं कर पा रहे हो, तो naturally you are not going to score even 6 in reading, I would say. Because I also encounter different students, even your batchmates, some of them are not of that level as Gagan was at, because she is from a very good school and she never faced any problem, because otherwise also she watches English programs, she listens to English songs, as I inquired of her in the beginning. Because as a teacher, as a trainer, I also need to understand the level of my student, from where I have to begin preparation of that student. So for her it was not a big deal to comprehend. The things I needed to work on was what different strategies she need to understand, apply and practice for scoring above 6 bands. Because 6 I don't think was difficult for her initially as well. She could score 26, 22, 30, even 31, 32 scores initially we had when she started doing the whole tests. But to bridge that gap from 32 to 40 was the task that we both had to achieve, and successfully we did that. So congratulations to you for that, because it is commendable. 9 in reading is really rare. It's honestly, it requires a lot of practice, which she did. One thing that I would highlight here is that it's not that how many tests in a day you attempt. I think you would also agree with that. Some students, they attempt back to back, like reading 1 is completed, फिर से 1 कर लो, फिर 10 मिनट बाद. No. Even if you do 1 reading and that too properly,
it's enough. But yeah, near exam you should at least attempt to, in order to score higher bands in that. Okay Gagan, so writing, what do you have to say about your journey of preparation in writing module? What did you do? Did you only focus on what was done here in the institute, or there is something extra that you did at home also? So please share it with other learners. स्टार्टिंग के अंदर तो जैसे यहाँ पर टास्क 1 एंड टास्क 2 होते हैं राइटिंग में, सबको पता ही है। और टास्क 1 के अंदर एनालाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम एनालाइज ही नहीं करेंगे ढंग से उसको तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मैम ने टास्क 1 एंड टास्क 2 पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था, स्पेशली हर एक स्टूडेंट के ऊपर, कि कैसे हमें एनालाइज करना है, उसको कैसे मतलब अटेम्प्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। आई थिंक कि राइटिंग के लिए इवैल्यूएशन सेकंड चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जो राइटिंग लिख लेते हैं, बट अगर हमने वो चेक ही नहीं कराई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड वो भी इवैल्यूएशन शुड बी बाय एन एक्सपर्ट ओनली, जिसको इंग्लिश एंड इसके राइटिंग के पैरामीटर्स के बारे में पता है, क्योंकि इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे ही आईएलटीएस का जो बैंड है वो दिए जाते हैं। एंड आई थिंक वो मैम ने हमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराए हैं कि वो कौन कौन से हैं, किस बेसिस पे दिए जाएंगे। एंड हम जो भी यहाँ टास्क करते थे वो मैम हमें चेक करके डेली ही बताते थे कि कैसे हमारी क्या मिस्टेक है। ग्रामर में भी मिस्टेक होती थी नो डाउट, बट अगर हमारी जैसे आज कोई मिस्टेक हुई है तो हमारा ये होता था कि नेक्स्ट डे वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, कि अगर हो भी गई तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, जिसकी वजह से आई वाज एबल टू स्कोर 7 bands. Yeah, which is really a good score, because normally students get stuck at 5.5 in writing, and I think the basic lack is not understanding the question in the first place. This is something that the low scores start, कि क्वेश्चन ही आपने समझने में टाइम ही नहीं दिया उसको, बिकॉज वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्लानिंग एंड डिस्कशन इन टास्क 2 आल्सो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन इन बोथ द टास्क इज वाइटल। उसके बाद आप लिख तो लोगे, आप आफ्टर यू लर्न लाइक हाउ टू राइट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड व्हाट इज द इनहेरेंट ग्रामर, बट अनलेस you understand the question, even the best of students are bound to fail sometimes or get a very low score if they don't follow the parameters which examiners want from us, like what should be written in what format. क्योंकि IELTS में जो देखा गया है कि एक है English level, like your English is good, but what they want us to present, both of these have to be equally weightage. अगर इंग्लिश आती है बट आपने पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया जिनके बेसिस पे इवैल्यूएशन होनी है राइटिंग के, और आपने बाकी चीज़ों को इग्नोर किया कि टास्क रिस्पॉन्स ही ढंग से नहीं दिया, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये तो आई यूज्ड टू गिव देम आल्सो एग्जांपल कि अक्सर बच्चे बोलते हैं आईडीपी मार्क्स नहीं देती, आईडीपी मार्क्स नहीं देती, हमें चीट करते हैं, दे वांट टू मिंट मनी और अर्न मनी। But if I ask you, like if you go to a restaurant and order a plate of let's say spring rolls, and someone brings you samosas, what would you do? Definitely you would get annoyed, है ना? तो same is the case with writing task. आपको examiner ने क्या task दिया है, आप वही उसको present कर रहे हो जो उसने मांगा, या कुछ और ही present कर रहे हो, तो that really is the first thing that you must take care of, and that we did. And I want to highlight one thing also, कि जैसे IDP ने स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि हमें कोई भी मतलब एसेस वगैरह या स्ट्रक्चर पर्टिकुलर कोई भी क्रैम नहीं करना, राइटिंग में स्पेशली। एंड इस चीज़ का ये हमें मैम ने भी स्पेशल दिखाया था, दैट वी शुड नॉट फॉलो एनी ऑफ there are many essays written on Google also, with the given 8 and 7 bands, but their structure is so मतलब उनका structure बहुत सही नहीं है। It's just that, like they've given bands, but the essays are not at that level, so that is something which needs to be taken care of. So memorized lines, memorized essays आपको बिल्कुल नहीं लर्न करना चाहिए। यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर ओन आइडियाज। येस, वोकैबुलरी इज इम्पॉर्टेंट,
But vocabulary के बारे में भी गगन, I think she would be a better person to tell you, because आपको लगेगा शायद being a trainer I'm saying this, but she must have felt herself vocabulary कौन सी important है. Because मैंने काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में भी देखा है वो वर्ड लिस्ट दे देते हैं बहुत लंबी लंबी हमें करने के लिए टू क्रैम स्टूडेंट्स कि वी शुड यूज दीज टाइप्स ऑफ vocabs, बट हमने यहाँ पर जो मैंने सीखा है वो है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए लाइक देयर आर डिफरेंट फील्ड्स लाइक एजुकेशन हेल्थ टूरिज्म, हाँ, तो उसके लिए हमें कौन सी पर्टिकुलर उसके लिए vocabulary होती है वो हम क्वेश्चन टाइप के वाइज ही सीखते थे. एंड उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मुझे अपने फाइनल एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि मुझे म्यूजियम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो वो हमने उससे रिलेटेड vocabulary यहाँ की थी एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. So basically it's not the cramming of the lists or the words, it depends how you use it, right? So vocabulary is not like heavy words or complex words or difficult words कि डिक्शनरी में ही उसका मीनिंग आपको देखना पड़े. दैट इज नॉट अ गुड vocabulary. Vocabulary means appropriate and used accurately. Appropriate according to the topic and accurately according to the grammar, like grammatical structure. So, like where to use education and where to use educational, like these two. One is noun and one is adjective. Which part should be, part of speech should be used where. So this comes with practice. This definitely comes with practice, right? So for writing, you need to practice a lot. You need to get your tasks checked by an expert who's equally good at IELTS and English level as well, both. Well, another question that comes to my mind is the role of grammar. What do you have to say about role of grammar in IELTS? I think that grammar definitely plays very important role. स्टार्टिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बेस इतना क्लियर नहीं होता है, वो ग्रामर में ही सबसे ज़्यादा मतलब वीक होते हैं एंड उसी में रीडिंग में एंड राइटिंग में ज़्यादा अपने मतलब नंबर उनके कम आते हैं ग्रामर की वजह से. एंड ये इवन मेरी इंग्लिश थोड़ी मतलब बेस जनरल होने के बावजूद भी मेरी गलती हो जाती थी ग्रामर में. एंड इस चीज़ का मैम ने स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि हमें हर दिन मतलब आर्टिकल्स, पार्ट ऑफ स्पीच एंड किसके साथ मतलब कैसे हमें लिखना है, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है कि रीडिंग में जिसकी वजह से आई वाज एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. It is essential for reading, for listening also when you're finalizing your answers, that grammar plays a vital role in that. Because अगर आपका grammar आपको समझ नहीं आई उसमें, there are certain typicalities and this is especially I'm talking for 6.5 above bands, right? So if your grammar base is not strong, you're likely to get a very low score in IELTS. So if you want to get a better band, then you must start working on your grammar. Okay, and what do you think about the two types? Yes, no, not given, true, false, not given, and the matching type. These are the two types, that students are scared of, and they normally commit mistakes in that. But what do you think about that? After doing strategies, what is your experience? I think initially this was my one of the weak points. True, false, not given was her weakness. Weak point. Yeah. But the day I completed my strategies, I was able to comprehend them easily. Yeah. And मेरे लिए मतलब वो चीज़ करना थोड़ा easy हो गया था. उसके बाद भी अगर no doubt मेरे एक दो गलत होते थे, तो मतलब डिस्कशन टाइम पीरियड भी होता था. अगर 1 घंटे की रीडिंग है तो उसके बाद हमारा हाफ एन आवर 45 मिनट्स डिस्कशन टाइम पीरियड होता था, जिसमें हर एक स्टूडेंट को पर्सनल टेंशन दी जाती थी. एंड जो भी कोई भी क्वेश्चन गलत होता था तो मैम पूछते थे कि वो क्यों गलत है और आपने क्या किया कि हमने ऐसा क्यों थिंक किया, मतलब क्यों सोचा ऐसा, जिसकी वजह से मेरी जो थिंकिंग लेवल है वो उस लेवल तक पहुंचा जो मतलब सही आंसर करने के लिए बहुत ज़रूरी था. सो दैट वाज द वन थिंग जो मुझे ये इस इंस्टीट्यूट में लगी दैट इज़ डिफरेंट. जो बाकी इंस्टीट्यूट्स में 2-3 टेस्ट भी दे देते हैं बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है. अगर हमने इवैल्यूएशन ही नहीं की किसी भी टेस्ट की देन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. and one should condition his or her mind actually कि मैंने, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर बच्चे ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये मैंने ये सोच के ऐसे किया मैम, ये मैंने इसलिए लगा दिया था.
then you know I as a teacher have to make them understand कि ये यहाँ ऐसे नहीं, इसको ऐसे सोचना था, this is where you went wrong. So gradually you know that conditioning is there, and that is required by every like student to understand कि where I went wrong, and to work on those weaknesses. She really worked on. Her proof was not given because that was one thing that was, you know, that was a hindrance for her to achieve more than 35, I suppose. 4, 5, 6 initially she used to get wrong, and I was worried that she has such a good level of reading and comprehension also, then she must achieve more than 8 at least in reading. So yeah, we could do that and she could do that. So I'm really you know, elated for her score. Okay, now moving on to listening. What do you think is the primary factor why you could score above it? I think listening वैसे भी मतलब काफी बच्चों के लिए बहुत easy होती है जिनका जनरल बेस थोड़ा strong है. Yes. And as compared to other modules. In starting like I used to watch Netflix on English movies and listen to English songs, due to which my comprehension in listening also was a little strong, and I was able to score 30 or 29 around that. But इसकी भी कुछ strategies वगैरह होती हैं listening की, fill-ups and some MCQs especially, वो तो हर पेपर में आते हैं and काफ़ी बच्चों को उसमें difficulty भी आती है, but strategies करने के बाद जैसे हमें यहाँ तक भी कराई जाती हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब chances हैं कि हमारे answers सही हो ही जाते हैं. And you can easily score 8 above. 8 above. Yes. इसके बाद भी जैसे कोई भी हम टेस्ट करते थे, उसके बाद हम दोबारा उसको मतलब घर पे जाके भी सुनते थे कि हमने ऐसा आंसर गलत क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम वो करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारा आंसर क्यों गलत था. Right. और हम नेक्स्ट टाइम वो रिपीट नहीं करेंगे अपनी गलती. सो लिसनिंग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंड लिसनिंग के लिए कैम्ब्रिज बुक्स बेस्ट है क्योंकि मोस्टली वैसा ही आता है. टेस्ट थोड़ा मे बी 1-2 पार्ट में फास्ट होगा, वरना लिसनिंग ठीक ही होती है. So what we can make out from her experience is that working on your weaknesses will definitely help you improve a higher score in that. Because if you leave it there and then कि हाँ चलो वो गलत हो गया कोई बात नहीं, तब तो फिर improvement नहीं होगी. You must redo the tasks. You must re-listen to the audios and then again understand where I went wrong and how it can be improved. So yeah, so that is something that is important. And in her case, as she mentioned that she used to listen to English the songs and watch English programs. So that is, I think you would like to suggest to the learners who are preparing for IELTS that switch to English listening more. If you are fond of movies, switch to English version of it or English movies for some time till the time you crack your IELTS, because it will really help you in training your ears in different kinds of accents that are used in these listening recordings, because without that you won't be able to comprehend what is being spoken. Right. Okay, so let's move to speaking module. No doubt you had a level of 7 and 7 plus. What happened that you got 6.5? Actually, initially when I went there, I was calm, but when I entered the examination room, I got a little nervous, and in the part 1, but it's not that I fumbled 2-3 times. Okay. And I think there only I lose 0.5 or that much. Okay. And इसके बावजूद भी मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि स्पीकिंग स्टार्टिंग में जनरल वोकैबुलरी और ये सारी चीज़ें चाहिए, थिंकिंग लेवल चाहिए कि हम क्यू कार्ड एंड वो अपने अटेम्प्ट कर पाएँ. हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर. हाँ, हाउ एंड वो मैम ने हमें स्टार्टिंग में सिखाया था कि जैसे कोई भी क्यू कार्ड होता है, या ज़रूरी नहीं है कि हमें जो पीडीएफ मिलती है बिल्कुल वही क्रैम करके आंसर्स नहीं. एट दैट मोमेंट ओनली हमें आंसर मतलब बनाना आना चाहिए कि spontaneously. That's very important speaking के अंदर. And it's just that कि वहाँ पर नर्वस बिल्कुल नहीं होना है. एग्जामिनर के तो ऊपर मतलब उनके गेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस के ऊपर भी हम कुछ टेस्ट नहीं कर सकते कि वो हमें मार्क्स देंगे या कम देंगे, क्योंकि
क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एग्जामिनर्स भी हैं जो बहुत खुश हो के मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं रिस्पॉन्स देते हैं, वो बैंड नहीं देते, एंड काफ़ी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी गेस्चर शो नहीं करते हैं, वो फिर भी 6.5 या 7 भी दे देते हैं. Okay. So how was your examiner? my examiner she was giving no gesture, she was just putting questions and I was answering them, and then she said You couldn't guess that whether she is happy or not. Yes. You couldn't guess. So forget about how the examiner is responding to you. Just focus on your speaking and don't lose confidence. Right? Okay. Then I would like to ask one question about the follow-ups part. Normally students cram or practice a lot about the part 1 and part 2 cue cards also. But there is some problem with the students regarding follow-up questions. What do you think? Like, how many questions did the examiner ask you? Examiner, she asked me 5 to 6 questions Okay. that were related to my cue card, but they were in general. Right. In general, we need to speak on that. And what was your cue card on? What was about that you filed a complaint and you were pleased about. Okay, you filed a complaint against someone and you were pleased about it. Okay. Whether it could be a company or any person. Okay. It could be. Okay. And follow-ups were related to that only. Like what type of people who complain in your usually, then it's your opinion how you think the answer should be, and it's not that you have to cram all of the questions that are usually given in the PDF, because you can take ideas from that. Yeah, ideas can be out, but your answer framing should be on your own personal thinking level. Then only you would be able to score good bands in speaking. Natural. It should be natural. It should be spontaneous, because that is one thing that is expected out of you. Okay. So don't get nervous and prepare well. Don't cram a specific list of questions or cue cards. You should, what I feel is, expand your mental horizon, acquire certain skills that you can frame any cue card on the spot. You should reach at that level before you attempt your IELTS. So thank you, Gagan, for spending time and having this wonderful conversation with us, because it would really inspire other students who are preparing for IELTS, who are beginners as well as who are struggling to get a good band or to even get a desirable band in IELTS. So thank you very much, and I really hope bright and brightest of the future for you ahead. Thank you very much, and thank you all for listening. If you want to watch these kind of inspiring videos in future, do subscribe to our channel, and I'll be uploading more and more other informative videos as well. So keep in touch, stay tuned, subscribe to our channel, and do press the bell icon so that you get notifications of all the videos that I upload in future. Thank you very much.